A very good evening to all of you. We are once again we are live on YouTube. Yesterday we were live on Insta, and this is all about the resurgence of Mohammad Sami. We all have seen his actions on the field, and so there are a lot of talk that are happening about his hair. And we have done his hair transplant some 4 months back, mid July, and the hair has started growing when he got the first opportunity to play. His hair started growing, and now it has been close to 4.5 months, and everybody is watching his hair, and it is, you all know that this is looking amazing, and then his performances are kind of giving the impression that he has got all the boosting from his new look. Actually, it is both internal and external, and India is so proud to have him, and the performances that he has been putting. And now tomorrow the finals, and we all are sure that we are going to lift the trophy tomorrow. So, Dr. Arika, would you like to take up some questions? Like there has been some questions. People are saying that how come Mohammad Sami has got a early growth? You can speak in Hindi also. Yeah. तो जो बालों की ग्रोथ रेट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी किसी के बाल बहुत तेजी से बड़े होते हैं और उनको हेयर कट की बहुत जल्दी जरूरत पड़ती है, और किसी किसी के बाल बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो उनको हेयर कट उतनी ही लेंथ पर जो हेयर कट करा रहे हैं उनको 2-3 महीने के बाद जरूरत पड़ती है। तो इतना नॉर्मल वेरिएशन होता है पर्सन टू पर्सन। सो बेस्ड अपॉन द स्पीड ऑफ हेयर ग्रोथ आपका जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है। तो हम हर किसी को 10 to 12 मंथ्स का बताते हैं। इफ समबडी इज लकी कि उनके 3rd मंथ में 4th मंथ में बहुत ज्यादा बाल दिख रहे हैं, तो आई वुड से दे आर लकी, द फाइनल रिजल्ट विल बी द सेम। बट इन Shami's case, I think we've already touched 5 months mark. Yeah, Right 4.5 now, months. Yeah, four and a yeah, half months. yeah. So it is. So every fortnight, हर 15 दिन में आप बहुत ड्रामेटिक चेंज देखते हैं आफ्टर 3rd मंथ और 4th मंथ ऑनवर्ड्स। तो हर 15 दिन में आपको चेंज देखने को मिलता है। So Vishnu, thank you for coming on the live. So, and Malik is saying after hair transplant, how many times minoxidil and biotin use in a day? So I was telling yesterday also, the minoxidil or finasteride or any medication has to be prescribed by the doctor. आप खुद से लेने वाले नहीं हो, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेने वाले हो, और डॉक्टर की गाइडेंस पे आपको लेना है या छोड़ना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। डोंट सेल्फ मेडिकेट, अपने से दवाई मत करो। और जैसे मोहम्मद समी के पीछे वाला अगर आप फोटो देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है वो खाली था, लेकिन उसके नीचे जो है लग रहा है कि आगे बाल जाने वाले हैं, तो इनको रोकने के लिए उनको दवाई लेनी चाहिए। तो ऊपर ट्रांसप्लांट करें या ना करें, नीचे को बचाने के लिए तो दवाई लेनी चाहिए, वो दवाई ले रहे हैं, तो पोटेंशियल चांस है कि रुक जाएगा, इसे बालों की ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई बोले कि ट्रांसप्लांट करो तो दवाई लेनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप दवाई लो टाइमली तो हो सकता है आगे को ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं हूँ, मेरे को करीब 7 साल पहले मेरे काफी खाली हो गए थे, एंड हम लोग प्लान कर रहे थे डॉक्टर आरिका हम कि मेरे को थोड़ा ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, बट मैंने फिनास्टेट से रेगुलर रखा, और उसका नतीजा है कि मेरे बाल एकदम ठीक है और मुझे ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो दवाई लेने का मतलब है कि ट्रांसप्लांट ना, आप पोटेंशियल यू कैन प्रिवेंट हेयर ट्रांसप्लांट इफ यू आर टेकिंग एट राइट टाइम। सो ये है। बट जैसे मोहम्मद सामी के केसेस में कुछ एरिया खाली है जिसमें ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, और कुछ एरिया ऐसा है जो पतला तो हो रहा है लेकिन वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसमें वहाँ दवाई ही ट्राई कर सकते हैं। सो दोनों उनके केस में हमको करना पड़ रहा है। आपकी क्लिनिक कहाँ कहाँ पर है? दीपक इज आस्किंग। तो हमारे क्लिनिक है गुड़गांव, बॉम्बे एंड हैदराबाद। उसके बाद ईशान श्रीवास्तव इज आस्किंग कि मैं I comb my hair backwards and tie a bun at the top. It seems my hairline is shifting up. So is it a sign of baldness? So Ishan, if you are tying your hair too tightly, अगर आप बहुत टाइट ऐसे बालों को ऐसे टाइट करके बन बना रहे हैं, तो वो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से हेयरलाइन शिफ्ट होती है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। बट अगर वो हेयरलाइन आप टाइट नहीं बांध रहे हैं और फिर भी हेयरलाइन ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो वो हो सकता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। मेल पैटर्न बॉल्डनेस कॉर्नर से ज्यादा प्रोग्रेस होती है और सेंटर से कम, बट अगर ट्रैक्शन है तो वो थ्रू आउट पैरेलली ऐसे ऊपर जाएगा।
तो पहली बात तो आप बालों को जो आप बांध रहे हैं टाइट बन, आप उसका टाइटनेस को कम करें, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसल्ट द डर्मेटोलॉजिस्ट टू मेक श्योर दैट दिस इज ट्रैक्शन एलोपेशिया या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली आपका डिसाइड होगा। सो दिस वाज माय आंसर फॉर ईशान। There is a question by Vishnu Charan. Vishnu Charan is saying, Monte Cristo is saying, like Monte Cristo is saying, have you heard about Vetro. Profin? Yes, we have heard. Like this is, you know, what happens is when there is an issue which does not look like to be controlled by medications, and new medications they keep on coming, and science is evolving, and this is a kind of a this medicine is to heal the wound faster. That does not mean that it could create new hair follicles. It is not going to create unlimited or infinite number of hair follicles. So that's completely wrong. So once you have plucked out a hair, new hair is not going to be regenerated there for sure. So this medicine is for rapid healing. So this is potential rapid healing. It is not a hair regenerator. So please be clear on that, and don't be hopeful that this is a magic pill that is going to come. And yeah, so yesterday also a lot of people are asking. So this is very hyped in the Western world now that this is going to be magic pill. No way, it can't be magic pill. So Vishnu Charan is saying he's an actor, and he underwent a hair LPP. transplant following LPP, and it didn't survive. So Vishnu, sorry to hear that. And yes, you can do SMP. We are doing SMP, so you can get in touch with us for the SMP. We can educate you about SMP, and we can tell you about good centers. No, he's saying like I had got a LPP hair transplant failed, whether I can try again or not. So actually the basic concept of hair transplant LPP is it has to be stable. Stable means there should not be disease activity, microscopic disease activity either. So that means the doctor who is a dermatologist who has sound knowledge about the skin pathology and skin diseases should give you the evaluation. There should be pathological evaluation also, the biopsy and everything. And our clinical experience says that at least 5 years of stability is required minimum. No, 1 year. 1 year of stability without steroids. Without steroids. We can attempt a test grafting before going for a full-fledged hair transplant. But what Vishnu is saying, he's already done a transplant and it got failed. Now he's asking whether I should go for scalp micropigmentation. Yes, you can go for that. And you can, we also do hair scalp micropigmentation, and you can get it done at other places also. Arpan has asked about the pain, that he's worried about the pain. So yes, Arpan, it's not a painless procedure, it's a proper surgery, but the pain is on a minimal side. It's a minimally invasive surgery. Pain is less. Pain is not moderate to severe. So most patients, if we ask them to scale the pain on 0 to 10, they scale the pain as 2 to 4, sometimes 2 to 5. So there is a technique to reduce the pain by using thin needles, by using a vibrator quite adjacent to the site of injections, by giving the injections slowly, and by using long acting anesthetic. So there are 4 or 5 techniques that we combine at Eugenix so that the pain is minimized. The patience of the person who is injecting, the nurse and the doctor who is giving the anesthesia, if they are impatient, they can cause more pain, because if they are injecting it fast with thick needle. So it's an art to create and reduce the to create a, I would not say painless, but minimally painful procedure. So yeah, that would be my answer. या कोई छोटा बच्चा भी करा सकता है एक्चुअली। वो इंसुलिन सिरिंज जिसे लगाते हैं ना लोग, सेल्फ लगाते हैं, खुद इंसुलिन लगाते हैं, उसी नीडल से लोकल अंश से लगा के ब्लॉक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में वही होता है। एंड जैसे डॉक्टर आरिका ने बताया कि देयर आर्ट ऑफ गिविंग इट, तुम जो नर्स या जो भी इंसान उसको रोज दे रहा है, ही हैज और शी हैज मास्टर्ड दैट। मैं दूं तो शायद मैं थोड़ा जल्दी दूं तो थोड़ा पेन परसीव ज्यादा होगा, डॉक्टर आरिका दें तो धीरे धीरे देंगे तो कम परसीव होगा। बट वो कुल मिला के दैट इज अ स्मॉल इनिशियल 4-5 minutes of negotiation of tackling that, and उसके बाद एक बार वो लोकल आने से लग गया तो फिर नम हो गया, तो उसके बाद आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि मेरे क्राउन, राज आर्यन, माय हेयर इज गेटिंग थिन डे बाय डे, आल्सो felt that my crown area is losing hair. Raj, definitely should go to a doctor, dermatologist who handles hair issues, and you will get an answer. So ये खुद ट्रीटमेंट नहीं लेना है,
proper, you should go to a dermatologist and take the proper prescription. संजय जी बोल रहे हैं कि हिंदी में बात कर रहे हैं, तो अब हम हिंदी में बात करेंगे. आई होप जो क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो हम उसका इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं, बट अभी चलते हैं. संजय पता बोले हिंदी बोलिए. ठीक है. हाँ. विपिन चंदेल बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड आई वांट टू टेल यू दैट माय हेयर इज गेटिंग थिकर. सो दैट तो अगर बाल अगर मोटे हो रहे हैं विपिन, अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है. संजय मुझे भी कराना है. अच्छा, आई थिंक उल्टा बोल रहे थे कि पतले हो रहे हैं. अच्छा. संजय आप हिंदी में एकदम, आप हमारे जो चैट हैंडलर हैं वो आप कर सकते हैं. नंबर आपको फ्लैश है, फटाफट अभी आप उनको मैसेज करिए, वो आपको फटाफट आपको रिप्लाई देंगे. यूजेनिक्स क्लिनिक रिपेयर ट्रांसप्लांटेशन करता है क्या? आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कब तक फिनेस्ट्रेल लेनी पड़ती है? वुड लाइक टू आंसर दैट? मोदी जी. नहीं, मेडी होगा. मेडी होगा. हाँ जी. सो देखिए, अभी हम लाइव पर मेडिसिन ना तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ना हम आपको बता सकते हैं कि क्या डोज में कितने समय तक लेनी है. हम आपको यही कहेंगे कि जहां से आप सर्जरी करा रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, टच में रहिए. बिकॉज पहले का ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाज दैट कि सर्जरी हो गई तो फिर छुट्टी है, फिर आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है. आप सर्जरी करा रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. बट जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट है, जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है, वो ये है कि सर्जरी के बाद भी आपको उन बालों को मेंटेन करते रहने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर से टच में रहना पड़ेगा. और क्योंकि एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन है, ना तो हम दवाई का डोज, ना ड्यूरेशन, ना नाम बता सकते हैं. बट आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जहां से आप सर्जरी करा रहे हैं, और उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. या एक क्वेश्चन है, मिस्टर सेट्टी इज सेइंग दैट प्लीज रिप्लाई मैम अबाउट is hair transplant permanent? Even after transplant, should we continue medicines for long time? Is hair transplant permanent? So उसका आंसर है कि मिस्टर सेट्टी, जो ट्रांसप्लांट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पीछे से लेके we take hair from the back and put it on the front, and sometimes we take from the bigger other parts of the body. And what happens is the backside hair is not 100% permanent. They also undergo miniaturization and thinning due to some effect of baldness over there, and as well as senility, that is aging. That means the hair which has been taken from behind, even in the best of the hands, best of the brains, so and you have planted, the hair grows, and after a few years you can experience some sort of thinning over there also, the transplanted area. So it is not completely lost, it could thin. So the thinning over years is expected, and you should understand that. And if you are saying that if I planted 100 hair, 100 hair should be there always on my scalp, that won't possible. Because some of the hair after the growth, they would go for a period, something called slipping stage or telogen phase. So let's say you have planted 100, let's say some 95 have grown. Out of 95, close to 10 or 15 hair at any given point of time will be going for a slipping stage. We call that telogen phase. And you will not enjoy all 95% of hair at any given point of time. There are multiple aspects into that. So whether the hairs are permanent, we should not say permanent, we should say long lasting. The end goals of any hair transplants are natural looks. Nobody should make out or can tell that you have got a transplantation. That is the primary objective of a transplant, of anybody who is going for a transplant, including all those guys who are watching this live and commenting here and participating. The second end goal is they want that scalp should not be visible. Once the hair has grown, the scalp should not be visible when the light will come from the top. The third is whatever area is bald, everything should be covered. And fourth being the hair should be lasting for a very long period of time. And we should be happy with that answer. If it is lasting for 20 years, 30 years, then we should be okay with that. Hair transplants are not perfect. That means we'll never get the density and the naturalness the way it was before the baldness. If we can achieve these kind of points, and then we should be happy with that. If we are creating an illusion of non-bald, अगर हम बाल लगाने के बाद ये सब भर जाता है और स्काल्प नहीं दिखता, जैसे मेरे बाल बहुत डेंस नहीं है, बट मैंने ऐसे कंघी किए हैं, ऐसे उनको सजा के रखा है. जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ मेरा खाली है, ये मेरा खाली है, बट मैंने इसको ऐसे सजा के रखा है कि मैं कंघी करके रखा है कि पता नहीं चल रहा है कि मैं गंजा हूँ, सामने से बढ़िया दिख रहा है. यही अल्टीमेटली हमारा एंड गोल होना चाहिए कि पता ना चले कि मैं गंजा हूँ या गंजा था कभी. So ये से वो सब practical points हैं, and some of them are doable and we should go for that.
Hair transplants are permanent. Answer is subjective. It can happen to some other people where there is no scope of baldness. In some other people when the baldness is very very severe. जैसे मोहम्मद सामी के बाल बहुत तेजी से जा रहे हैं और वो काफी खाली है पीछे भी, तो और उसका गंजापन होगा, जहां से मैंने निकाले वो एरिया भी आगे जाके 15-20 साल का थोड़ा थोड़ा थिनिंग होगा। तो थोड़ी सी आंसर ऐसा है कि आपको कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन टू समराइज आंसर, लॉन्ग लास्ट अगर करता है तो देन हेयर ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल। अगर विद इन 1 ईयर 2 ईयर जाता है फिर करने का कोई फायदा नहीं था। और कितने दिन लास्ट करेगा ये डॉक्टर को, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उनको समझ में आ जाता है शुरू से ही कि ये लंबा लास्ट करने वाला नहीं है। दे शुड एजुकेट द पेशेंट, यह नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट को लगा कि नहीं अगर 1-2 साल के अंदर फिर मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल भी पतले होने वाले तो नहीं कराता हूं मैं। सो इट शुड बी अ डिसीजन मेड आउट ऑफ लॉट ऑफ एजुकेशन। सो बाप रे बाप, ये तो बहुत सवाल आ गए। ये कोई आप आंसर करते रहो फिर बीच बीच में। ये बहुत एक सवाल है, किसी ने डेविड हुटन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, do you have a different approach to a client who is a Caucasian with fine light color hair and someone from Asia who has natural thick dark hair? From David Hutton, would like to respond to that. Sorry, I missed it. No, so somebody saying do you have a different approach for Caucasians where the fine hair, light hair versus Asians who have dark hair, thick hair? Caucasian लोगों में हम जो no, there's a David is in this okay, man. I'll have to speak in English. Okay, so we use a smaller punch, David, in Caucasian patients because the distance between the follicles is less in them, and because the number of hair per follicle is more. Okay, so even if we encounter a partial transaction, so let us suppose there's a quadruple graft, there is a graft which has 4 hair and we are able to extract only 2 or 3 out of them, we are happy with that. That's called partial transaction. That is our technique. That's how we do it. So the one graft which remains, it grows back in the donor, and the triple graft that we have harvested, it grows on the front, the bald area. The other advantage is the thin, the fine, the caliber. The Caucasian hair is much finer in caliber, so it gives an extremely natural look to the hairline. So that is also one important thing. So it is much more favorable to do a hairline restoration and temple restoration in Caucasian people because the hair is fine and straight. But the drawback is the skin to hair contrast. So skin to hair contrast ratio is also very important. If somebody has a fair skin and black color, they get a good hair skin to hair contrast, and they get a good wow kind of transformation from hair transplant. But when the situation is reversed, because your skin is also fair, very very fair complexion, and hair are also a little bit light in color, so the skin to hair contrast is not so good in Caucasian people. So that is one drawback, I would say, but other things are much more favorable. So it is much more easier for us to achieve full coverage in grade 6 grade 7 patients in Caucasians rather than Indian or Asian people. So there is a there are a lot of questions about cost, so we can post the packages link so they can get the cost idea from there. Yeah, so there is somebody, your facility is worldwide best. Your facility is worldwide best, but common person will trust on you after your language and more schemes for rural area person who are not to pay a lot of money to transplant. So do something for those. So I think the cost factor we are not going to discuss over here. So after my first transplant, one person from Bangalore had mentioned that he has lost the transplanted hair. I just throw it in brown curry. Brown curry. People in my office, Mr. Wood Ragan Brown Curry is saying people in my office will laugh at me if they see me in visible scars. Yeah, so there is no visible scars, sir, after the surgery, neither in the recipient zone nor in the donor area. So don't worry about the scarring per se. this brown color again. I have hair in my ears, nose, black. Oh my god. So I think brown curry. Please, please be in touch with
Did Mohammed Azharuddin also get his hair transplanted at your clinic? He looks young as well. Yes, we did his transplant some 1 year back, and you must be seeing he, Ravi Shastri, Nikhil Chopra. Nikhil Chopra has got it done 1 month back. Ravi Shastri got it done some 1 year back. Yes, so you can see him. So GTV. So he's saying I'm typing he English, but went I'm to writing. Mumbai clinic, but due to more celebrity, I can't decide to plant there. No. So we do normal people also. So maybe 0.1% are celebrities, and of course the celebrities, they are more celebrities, उनका चेहरा ऐसा रहता है कि लोगों को समझ में आता है. अदरवाइज सारे लोग सेलिब्रिटी नहीं है. और हमारे क्लिनिक में मतलब 1000 में कोई एक ही पेशेंट होता है सेलिब्रिटी, बाकी लोग तो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं. नॉन सेलिब्रिटी पेशेंट्स के लिए मैं हूँ, सो आई विल टेक केयर. कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर प्रदीप विल टेक केयर ऑफ द सेलिब्रिटी पेशेंट्स. नहीं सर, हम सबके करते हैं जिनको बालों की जरूरत पड़ती है. क्षिति जोशी इज सेइंग कैन वी गेट टॉलरेंट टू फिनेस्टेराइड, प्लीज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू प्लान द मेडिकेशन जर्नी. क्षिति इज अगेन, जैसे डॉक्टर आरिका ने शुरू में बताया कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें दवाई के बारे में उतना बता सकते हैं कि डॉक्टर से ही लेना चाहिए, आपको अपने से नहीं लेना चाहिए. बट हाँ, कुछ कई बार दवाइयों से, उसको हम लोग टाइकोफाइलैक्सिस बोलते हैं, कि दवाई थोड़े दिन बाद काम नहीं करता, उसको फिर तोड़ने की टेक्निक डॉक्टर के पास है. थोड़े दिन बंद किया, फिर से दिया, और क्या उसके सब्स्टिट्यूट को दिया, ऐसे कुछ ट्रिक है, वो कर सकते हैं. बट अगेन आपके केस में कैसे करेंगे, वो क्या काम करेगा, वो आपका जो डॉक्टर जिसके साथ आपकी ट्रीटमेंट चल रही है वही समझा पाएंगे आपको. एंड मोस्टली सारे डॉक्टरों को इसका समझ है कि कैसे करना चाहिए. एंड डोंट, ये दवाई लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर से लेना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर डॉक्टर से नहीं ले रहे हो, फिर आप जो है ना, आप उसके कई बार गूगल पे जाओगे, यू विल गो टू द गूगल, यू गो टू सोशल मीडिया, यू विल टॉक टू पीपल, देन विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल नॉट टेक द मेडिकेशन. सो दैट्स नॉट ट्रू. इनका मैं क्वेश्चन ढूंढ रही थी. रक्षय एसवी ये बोल रहे हैं कि ही गॉट अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम यूजेनिक्स 2018-19, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू लूज ट्रांसप्लांटेड हेयर. सो रक्षय, प्लीज गेट इन टच विद अस. वी हैव आवर डेडिकेटेड टीम, द ई केयर टीम वी कॉल देम. सो आप अपनी फोटोज वीडियोज शेयर कीजिए. आई थिंक यू आर फ्रॉम बैंगलोर, सो वी कैन गेट इन टच एंड वी कैन इवेल्युएट द सोल्यूशन. कि ट्रांसप्लांटेड बाल जो जा रहे हैं, आपने 2018 में जो सर्जरी करी थी, अभी 2027 चल रहा है, 5 साल, तो हमको देखना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांटेड के जस्ट आसपास वाले जा रहे हैं, ट्रांसप्लांटेड वाले थिन हो रहे हैं. अगर आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उनको रोक भी सकते हैं, जो रिसेंटली गए हैं उनको रिवाइव भी कर सकते हैं. आपको हमारे साथ मिलना होगा. देखिए, बाल एक ऐसी चीज है, हार्ट बीट की तरह है. जैसे जब आप भागते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप रेस्ट करते हैं तो कम हो जाती है. तो हेयर इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ अ डायनेमिक थिंग. यू नो कि हमारे बाल बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, तो वो हेयर साइकिल एक डायनेमिक चलता रहता है. हार्ट बीट का तो वेरिएशन विद इन मिनट्स, आवर्स होता है, बट हेयर साइकिल का जो वेरिएशन है ओवर वीक्स, मंथ्स होता है. आपने कभी कभी लोगों को कहते हुए सुना होगा, बैड हेयर डेज, गुड हेयर डेज. इन गुड हेयर डेज दे विल फील कि मेरे बाल वॉल्यूमिनस, डेंस है. देन समटाइम्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ टिलोजन हेयर इज मोर, देन दे मे फील कि इट्स अ बैड हेयर डे फॉर देम. सो अगर आपके ट्रांसप्लांटेड बालों में कुछ डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, आप डॉक्टर से मिलिए और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करिए ट्रांसप्लांटेड के एकदम बाल और उसके 1 साल बाद की पिक्चर्स का और अभी की पिक्चर्स का. और अगर ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी थिनिंग हो रही है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड वी शुड टेक केयर. बिकॉज अगर आप दवाई ले रहे हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की थिनिंग हो रही होती है. So there are 2 questions I would like to take up. One guys from Odisha, Srinivas Senapati Singh, Bhubaneswar Clinic, Kotache. He's from my state. Srinivas, amaro फायर स्टेशन पाखरे क्लिनिक अच्छी, छोटो क्लिनिक अच्छी, जस्ट सेठी कंसल्टेशन पाई. You can, I will ask Vijay Raj, can you just help Srinivas? He can connect with the Odisha office. One guy has said, sir, why you are not dyeing your hair? So dyeing is a cumbersome job. So, once you dye and after 15-20 days again you like to, white hair will come, and again there is another, headache of dyeing it. So I thought let's remain gray only. So that's it. Convenience and inconvenience. So Adam is saying, doc, if you have receding hair fall from front and back, also does hair transplant stop the hair fall over? No, I'm on minoxidil for 5 years. No, Adam, the hair fall and miniaturization of the hair is not stopped by transplant.
Transplant is a process by which hair is taken from one area and planted one area where it is empty. But if you look at this picture on the behind, so we have planted hair on the empty area. But those current hair that he had, he can continue to miniaturize and fall. So to stop that, you can try medication. Sometimes medication they don't work also, but that is the only best fight that you have for baldness prevention. Somebody saying why you are asking why you give finasteride. As I said, like we prescribe medication. It is not restricted only to finasteride. Other medications are also there, and sometimes some combination medicines are also given. It is all about the what is going to work on the patient according to our medical clinical judgment. So whenever you go to your doctor, wherever local doctor, whomsoever you are consulting, that doctor will give you the medical regimen. So it is not that only finasteride; the other medications are also there, and and they work in more than 90% of the patients, and in 10% of the patients they don't work also. But unfortunately, other than those medicines, as of today, we don't have anything else which can potentially help us from preventing the thinning. Srinivas, I think you have already answered the question. Again, people are asking India's football slipping. Okay, so there is somebody because is asking like when the blood pressure is more. So blood pressure is more again, like you should get a clearance from your doctor to the procedure, and 150 by 90 is the upper side. During the procedure, the blood pressure fluctuates also a little bit up and down. So your blood pressure will be controlled. So get it cleared by your physician or cardiologist or whomsoever is seeing you. And we don't take patients whose blood pressure is not controlled, whose sugars are not controlled. If he has got anything else, then we get a clearance from the doctor. We manage that. It should be 100% healthy before he comes to us. Even though we do only superficial procedure and very only up to 2 to 3 millimeter deep inside the skin we go, but still it is a procedure, and we give local anesthesia. We give some medication to shallow also. And since it's a cosmetic thing, there is no emergency. We should not be doing it hurriedly. There is no. We are not going to fight it out, or they're going to something to accomplish by doing it hurriedly. So it should be medically 100% fit before we take anybody for a procedure, including blood pressure. So GTV is posting again and again. Please don't ignore my messages. He has written to email to Maharashtra government to make a policy of bald to bold for everyone. Sorry. Acha, GTV is please read my messages. It's for your trust and growth, because I am really appreciate your facilities and more love. What is the question he's saying? His question is that the surgery should be affordable to very poor people also. That's I think but for rural people also. Yeah, so actually those pricing and everything you have to discuss with us, and we have very competitive prices. And we have to also, the team has to also survive. The people who are working with us, more than 200 odd people are working with us. They have to survive. The organization should survive. We spend a lot of money on instrumentation, our own training and innovations. So the whole system should survive. Costing को compare करें, hair transplant को as a cosmetic surgery with other cosmetic surgeries, तो आप पाएंगे कि hair transplant का जो cost है, अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप ट्रीट करें, जैसे आप कोई शर्ट लेते हैं, आप 5-6 महीने में यू कैन गो टू अ न्यू शर्ट, सो इट्स अ एक्सपेंस बेसिकली. बट ट्रांसप्लांट इज अ इन्वेस्टमेंट. यू आर गोइंग टू कीप इट ऑन योर फेस फॉर नेक्स्ट 10-20-30 years. तो अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एक बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी चीज चलने वाली है, और ये एक प्रोसीजर है जो आप अपनी बॉडी पे करा रहे हैं, तो इसको आप एज अ एक्सपेंस खर्चा मत समझिए, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझिए. और जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, आप समझिए कि आप वो अगले 10 से 15 साल की आप तैयारी कर रहे हैं. बिकॉज सर्जरी के बाद जो हम बार बार आप डॉक्टर्स आपको कंसल्ट करते हैं, हमारी टीम आपके टच में रहती है, हम आपको बहुत सारे PRPs बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री भी रहते हैं और कुछ मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में रहते हैं. तो हम जो आपको कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस देते हैं सर्जरी के बाद, उसमें कहीं कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. तो आपको ये समझना होगा कि ये जो है एक, तो आपको फिर वो कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा. आजकल जो लोग हर चीज पे खर्चा करते हैं, अपने ड्रेस पे खर्चा करते हैं, अपने घूमने फिरने पे खर्चा करते हैं, अपना जो आप चश्मा पहनते हैं उस पे आप खर्च करते हैं,
तो आप अगर आप बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी से हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि बाकी कॉस्मेटिक सर्जरीज का रिजल्ट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। जैसे कोई बोटॉक्स कराता है, फिलर कराता है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, उन सारे ट्रीटमेंट्स का जो रिजल्ट है साल भर 1.5 साल तक रहता है, बट ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आप बहुत लंबे समय तक इंजॉय कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो हमारे प्राइसेस हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी हाई, बट येस, because we are a big team of doctors now, so that's why we have differential packages, but per se the Eugenix costing is very competitive with the existing this thing. And if you look at the quality and longevity of the results, you won't find that it's an expensive investment. So there is somebody saying like आपका price बहुत महंगा है, like your cost is costly. Why should not go to I Turkey? think we have already covered Yeah. So I am not going to answer those questions. देखिए, मतलब आप अगर टर्की में या कहीं और किसी कंट्री में जाके करवाते हैं तो अगर वो आपको बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छा एक पोस्ट ऑफ केयर भी दे पा रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट कि सर्जरी करके फिर भूल गए, वी शुड बी इन अ कांस्टेंट एफर्ट टू गेट इन टच विद द पेशेंट। सो ऐसा नहीं है कि मेरा ये कहने का मतलब है, कॉस्ट को सोच के आप अपना वो मत करिए डिसीजन, आप अपना जो फाइनल लुक है उसको बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको कोई और क्लिनिक टर्की में अच्छे रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहा है और आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पेशेंट्स, आपके दोस्तों ने वहां से कराया है और आपको लगता है कि आपको वहां से बेटर पोस्ट ऑफ केयर भी मिलेगा, आप बार बार डॉक्टर को कंसल्ट कर पाएंगे, तो देयर इज नो हार्म इन चूजिंग अदर क्लिनिक इफ यू आर गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट to do our best service to our patients even after the surgery. So somebody is asking a question that yeah, Ghulam Asghar saying we have a Dubai clinic. No, we don't have a clinic in Dubai. We operate only in India and Bombay, Delhi, and now coming up in Hyderabad. Thomas John, hi Dr. Sethi. This From is New Vinod York. John. Vinod I John. came from New York last week for ST. Everything was so good and thank you so much. Really impressed with doctor, technicians, cleanliness. Love you all. Thank you so much, John, for coming all the way from there. And we do get close to 30 to 40% people come from USA, UK, and other English-speaking countries, and the number is slowly increasing. And hopefully, India would become the kind of center of hair transplantation for the whole globe. And now it has been like people talk about Turkey. Turkey has done its good marketing, but if you see the compare apple to apple the results from Turkey and overall Indian clinics, then it's like Indian clinics are much ahead. Doctors, intelligence and skill and everything much ahead than at least Turkey, I can tell you. So Jayesh Kataria is saying, why are you not answering my question? You Jayesh- can reply a post about the base package in that. Jayesh Kataria is asking, so we'll post the answer. Okay, to just that. like we are not discussing about Yeah, the so we prices. are skipping the topics which have already been covered. Some people, Rohit Rawat is saying, some people from Europe prefer eugenics over Turkey. I want to know why. So, answer is very simple. They do the research and they found us the best for them, and they came. So, what happens is you should do your research. They do research for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Some people have come to us after doing 20 to 30 years of research, and that's it. They हाँ, तो वो हो रहा है, यूरोपियन पीपल आर चूजिंग इंडिया, यूजेनिक्स इन इंडिया मोर देन टर्की, और हालांकि टर्की की उनकी फ्लाइट बहुत सस्ती पड़ती है, उनको वीजा नहीं देना पड़ता, ज्योग्राफिकली काफी सारे एडवांटेजेस हैं, बट देखिए वो एक वन टाइम कॉस्ट है, आपका ट्रैवलिंग, आपकी बॉदरेशन, बट जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिले, जहाँ आपका ट्रस्ट ज्यादा बने, there you should be focusing. So Brownker is saying, like, can I use a hair piece after my transplant? You can use a hair piece for sure. Like after 10 days of a procedure, maybe 15 days of procedure, you can wear a hair piece, but it should be very loose. It should not be tight. It should allow the hair beneath to breathe. So if it is kind of and the edges which attach to the scalp, usually people have clips or they have glue. They should not be covering the transplanted area, and it should use for a few hours in a day. So if those things are okay, then you can wear a patch for sure. Like a lot of people who go for the movie shoots and all the celebs in Mumbai, whom we do, a lot of people, they go for suits soon after the procedure, and they use that. But you should know that it should not be tight.
And you should, if you have all those precautions, then you can wear the piece for sure. महिपाल व्यास इज आस्किंग कि 23 की एज में मेरे को ग्रेड 3 बॉल्डनेस हो गई है, तो यस यू कैन गो फॉर अ सर्जरी एट 23 अगर ऑलरेडी आपकी ग्रेड 3 बॉल्डनेस हो गई है. हम 25 की एज के बाद रिकमेंड करते हैं. अभिषेक तिवारी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था. आई डोंट नो व्हाई दे हैव डिलीटेड. No, they say like Rishikesh clinic. Yes, we have got a clinic Rishikesh. There we don't do hair transplant. But we have got a yes, skin clinic. Yeah, simple. And we started from Rishikesh, and Yes. so the answer is yes. So I think it's a general clinic over there where they are running. Jayesh Katare saying open hair transplant clinic in Mumbai. We already have a clinic, Jayesh, in Mumbai. It's in Bandra, Turner Road, and we have that clinic since 2017. So you can. there is a guy Navin. He says Shami का hair transplant fail हुआ. So अभी तो उसका रिजल्ट कंप्लीट आया नहीं है. फेल कैसे हो गया? अभी 4 महीने में इतने बाल आ गए उसके, और फेल कैसे हुआ वो? बीच में एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि आई एम वरीड बिकॉज ऑफ अनवांटेड एक्सेस बियर्ड हेयर. तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ हेयर रिमूवल. सो अगर आप अनवांटेड एक्सेस बियर्ड से परेशान हैं तो आप लेजर हेयर रिमूवल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. लेजर हेयर रिमूवल के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं. डायोड लेजर है, एनडीएग लेजर है, तो उस लेजर से आप अनवांटेड हेयर से निजात पा सकते हैं. और आजकल men are opting for a beard reshaping, that is they will go for a laser of the upper border of the beard and sometimes the lower border. So you can go for a laser hair removal. But yes, अगर आप बॉल्डनेस से हैं परेशान, मतलब आपको रिस्क है मेल पैटर्न बॉल्डनेस होने का, तो हम उस अनवांटेड बियर्ड हेयर को हम ऊपर यूज कर सकते हैं फॉर रिवर्सिंग द बॉल्डनेस. एंड आजकल एक हमने नई चीज शुरू की है कि हम इन अनवांटेड बियर्ड हेयर को हम डोनर रेस्टोरेशन के लिए भी यूज करते हैं. जैसे कि आपके स्कैल्प ग्राफ्ट्स पीछे के एग्जॉस्ट हो रहे हैं रेगुलरली और आपको फ्यूचर में लग रहा है कि और भी ग्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हम उसी सर्जरी में जहां से हमने ग्राफ्ट्स स्कैल्प के निकाले हैं वहां पे हम कुछ अनवांटेड बियर्ड भी लगा सकते हैं, जिससे आपका कि स्कैल्प डोनर भी मेंटेन रहेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो वो भी एक नई चीज है जो अभी हम कर रहे हैं. तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लीजिए. अगर आपको कोई बॉल्डनेस नहीं है बट आप एक्सेस बियर्ड से परेशान है, देन बेटर गो फॉर अ लेजर हेयर रिमूवल एंड डोंट कम फॉर अ ट्रांसप्लांट. So there is a guy Kush is saying that I have read in the hair transplant network that your clinic does a lot of surgeries, and so yes, we have got many doctors now. We have got like 7-8 doctors who lead the surgeries. So the 7 doctors are there; they can do 7 surgeries, and we are adding more doctors. New clinic is coming up. More doctors are joining in. So it is Dr. Pradeep who does only 1 surgery in a day. Dr. Arika does 1 surgery in a day. And other doctors are also there. So if you are doing many surgery, because we are getting that kind of workload, so the business is growing and more doctors are joining in, more like technician nurses are joining in. So we are doing it the way it has to be done. So it is not that we are like compromising any surgery. I'm not doing 10 surgery in a day. So I do, once I pick up somebody, I do that procedure. Similarly, other doctors who are qualified, skilled, intelligent, they are doing it. So if anybody is giving those kind of information, then they have to come and verify, and it has been done multiple times. So we are not going to give explanation for that. So Jayesh has asked the location, the name of Bandra. Clinic name is same, Eugenix Hair Sciences, and it's in Bandra Turner Road. So Brown Curry is saying the price for such skilled work is very reasonable. These are proven doctors and they are not overcharging. Many local doctors are scammers and tough to find top professionals like this. So thank you so much, Brown Curry, for appreciating our work and us. So I don't agree that you're calling doctors as scammers. No, I was saying some clinics. So she's saying some of the, there's a lot of people who charge. See, every medical procedure has some risk of failure, the surgery not giving you a good result or finally. So that is why for you, peace of mind and seeing the clinic's performance and the previous patients is important in making the decision, and that should be the basis of our decision making. So now coming back to the procedure proper. So now this was all about educating and updating about Mohammed Shami. Mohammed Shami got his procedure done in
mid of July. I have to mix Hindi and English. I was going to US, and in the mid of my journey, I was in UK. And Ravi Shastri, he just called me. He said, Doctor Mohammed Sami has taken a break from the West Indies tour, and you go and do his procedure. I said, sir, I'm in London. I'm going to USA. I was in a wedding function there in Newcastle, so I had to cut short my trip. Like I was in the kurta and all the wedding thing from there. Newcastle to London, I came and I took the flight, came to India next day morning. We did the procedure. It was for 2 days. So July, mid, August, September, October, November. So kind of completing 4 months. And in 4 months, this is what you are seeing. And definitely this is pretty early in terms of the result that has come. Uh, this kind of hair comes by 8 or 9 months. So he has got a very early growth, and I'm sure he will have more growth. By March, it should be much more. And sometimes we get this kind of early growth, but in most of the cases, we don't tell patients that you should be getting this kind of growth before 10 months. And the complete growth happens by 10 to 12 months. And in Sami's case, it is early. I believe that he was 100% sure about the procedure, and he had tremendous trust on the doctor. And whatever we were saying, he was following that. And he's a sports person, very positive man. He's healthy. We all know that. So all those things got accumulated, and he got this kind of very early growth. And we saw on 15th the growth. 19th tomorrow, I am sure the hair will be a little bit more, and he will take 5 more wickets, and he will rub the ball on his head. It's already 8:40. 8:40. Okay, it has been like we thought we'll go for only 30 minutes. Tell something about Hyderabad branch. It is running now. No, Hyderabad Satyanarayan, we have not started yet. Potentially end of this month. We should be having the soft launch, and by December 1st or 2nd, we will properly functioning it. Split hair, Surya, consult a local dermatologist and they will be able to fix your issue. Wasim, innovation is the biggest achievement. You already introduced DHT to world. Wish you next research stem cell will be more successful. Thank you, Wasim. We are on it. Sorry, did not mean that there are many clinics that do provide. Okay. So I think we should conclude this live now. And if you have got any questions, we came to live after many months. If you have got questions, then directly you can be in touch with the clinic, and we have got a support system. They will give all the answers, and if the questions are clinical, then definitely we are there to give the answers. Thank you everyone. Thank you, Gulam. And Gulam, come to India. India is, you'll Gulam be at had home. already been in India. No, he's in Dubai. He's in Dubai.